Ethylene is the only gaseous plant growth hormone and it's effective in a concentration 0.01 to 10 ppm. And ethylene is the hormone which fit in both the categories. That is, it will act on the plant as a growth promoter as well as growth inhibitor. It fit in these both category, but it is having more inhibitory function as compared to growth promoting function. Then if we see about this ethylene, so its production means what is the precursor from where it is going to form. So precursor of this ethylene is methionine. Methionine is amino acid which is the precursor of this ethylene. Then this ethylene is mainly found in a places where the ripening of fruit is going to happen and senescent leaves. These are the place where this ethylene is going to found. Where it is going to found? In the ripening fruit, in the ripening of fruit where this is going to happen at this place, and also in a senescent leaf, senescent leaves. Then furthermore, if we see about the ethylene, so ethylene being it is gaseous, it can travel through the intercellular spaces also by air. So that's why it can reach up to a long part, means where it is going to produce. So it can travel up to a much distance where it is going to act through intercellular spaces. Being it is gas, it can pass through intercellular spaces as well. Then if suppose in a godown, if apple is there and it is going to produce the ethylene, then it will inhibit the sprouting of the potato. So this is also the property of this ethylene. And as I told you, the property of ethylene, if we see, it is going to fit in both the categories. And there was the scientist whose name was Cousin, so who confirmed the release of volatile substance. Volatile substance, ethylene is a volatile substance because like a petrol, these things are there, they are volatile, they cannot stay for a long time if it is exposed to air. Then from the ripened oranges, that hasten means speed up, that will increase the speed up of the ripening of stored banana. So here you can see how the ripening is going to happen with the help of ethylene. If you see the brown spot on the banana, this is good for the health, means this is naturally ripened. Then this is identified as ethylene. Remember the name of scientist here. Then this is simple gaseous PGR. I told you this is the only gaseous PGR and act effective in a concentration 0.01 to 10 ppm. Then synthesize in the large amount of the tissue undergoing senescence and ripening of fruit. Senescence means what? The part where the ripening of fruit is going to happen. This is called as senescence. Now we are going to see about its this function. This ethylene is going to found in the almost all plant, all organs, but especially it is going to found in the senescent leaves and where the ripening of fruit is going. Now, if we see about the function of this ethylene hormone, so first function is triple response effect, means it will increase the horizontal growth of axis seedlings, then swelling of axis, then apical hook formation. These are the function which is called as triple response. Triple response, triple response, this one, that is the horizontal growth of seedling, then swelling of axis, this is number 2, and apical hook formation, this is called as triple response. Then it will promote senescence, means promoting the cell aging, this is inhibitory function, and oxygen of plant. Oxygen means the part which is not necessary for the plant after its ripening or its function is over, or suppose on the plant there is much more load, means if plant is unable to get more nutrient but parts are more on the plant like leaves, etc., and if the plant want to remove them, so that is oxygen, removal of the part, especially the leaves and flower. Then it will promote the fruit ripening, famous function of its this one. So what ethylene will do? It will help in the ripening of fruit by increasing the rate of respiration, and this is called as respiratory climactic. What is meant by respiratory climactic? The ripening of fruit by increasing the rate of respiration. This is called as
respiratory climactic. Then again it will break the seed and bud dormancy, seed dormancy in the peanuts and bud dormancy in the potato. Then this thing I told you, then it break the seed and bud dormancy. So seed dormancy in peanuts I told you, and then bud dormancy in potato. Then germination in the peanut seed and spotting of potato tuber. So this is the function of this ethylene. Then again furthermore if we see the function of this ethylene, so it is going to help the plant which are growing in the deep water like rice, paddy crop. So in that plant petiole and internodal elongation is going to happen. Here you can see the 4 photos are there. In the first image you can see that in the deep water rice plant it will help for the internodal elongation as well as for the petiole elongation. In the number second photo you can see the growth of root and root hairs. Root hairs increase the surface area for the absorption. In the number third photo you can see the flowering in the mango. In the fourth you can see the synchronization in the pineapple, synchronization of fruit. This pineapple is a composite fruit which is formed from many flower. From many flower one fruit is going to form. And we know the cluster of flower is called as what? Inflorescence. So this one promote the rapid and internodal elongation in the deep water rice plant and help the leaves and upper part of the shoot to remain above the water. Then promote the root growth and root hair formation, which will increase the absorption surface. Then used to initiate flowering, and for synchronizing synchronizing मतलब समकालीन बोलते हैं इसको, एक समय का, और contemporaries ये इसका synonyms है word. Then it also induces the flowering in the mango and it regulates many physiological processes widely used in the agriculture. तो वहां पर इसको यूज किया जाएगा. Then furthermore अगर हम देखते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ सोर्स ऑफ इथिलीन इज इथेफोन. ये इसका स्प्रे बनाया जाता है. इथेफोन ये जो दिख रहा है ये इसका स्प्रे है. तो इन aqueous solution is radially absorbed and transported within the plant and release the ethylene slowly. ये मैंने पहले बोला था. What will happen being it is in a gaseous state, this ethylene, so it can transmit through the intercellular space because it can transfer through air as well. So that's why it can reach up to the long distance. Then it will hasten का मतलब बोल चुका हूं मैं, speed up. It means speed up fruit ripening in the tomatoes, apple, and accelerate the oxygen in the flower. We already saw it will increase that oxygen and senescence. Then in fruits like thinning of cotton, walnut, cherry. Thinning means what? On the plant, if suppose there are the more leaves are there, more fruits are there, and plant don't want that much because suppose it is getting less nutrient or other condition, or if the plant don't want that kind of much more leaves and fruit, suppose it is ripened now, function is not there, so it is going to remove. That is called as thinning. Like suppose we are carrying much weight on our body, but suppose we are tired or the some altitude is there, so we will drop the luggage and making temporary thinning to ourselves. So like this. Then female flower in the cucumber, thereby increase the yield. So it will promote the female flowering in cucumber. That is also a gaseous PGR जो 0.01 से 10 ppm के concentration में active होता है. only gaseous PGR है और produced in most of the plant organs, but maximum production कहाँ पर होता है? तो ripening fruits और जहां पर senescent मतलब cell aging होता है वहां पर ये produce होगा. senescent leaves high concentration जो है ऑक्सीजन का वो इंड्यूस करता है इथिलीन फॉर्मेशन के लिए. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन. ऑक्सीजन आपको पता है ग्रोथ प्रमोटर है और इथिलीन ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर है, बट ज्यादा इनहिबिटरी फंक्शन है एज कंपेयर टू प्रमोटर. प्रीकॉर्सर इज मिथ्योनाइन. ये बनता किससे? तो इसका प्रीकॉर्सर मिथ्योनाइन है. जैसे हम ऑक्सीजन के लिए ट्रिप्टोफैन बोलेंगे. Travels not only within the plant but also travels through the intercellular space as well, being it is in a gaseous state. Then it is given out by apple
इनहिबिट द स्प्रोटिंग ऑफ पोटैटो स्टोर्ड इन द सेम गोडाउन। एक ही गोडाउन में अगर हम एप्पल रखे वाले तो वो पोटैटो का स्प्रोटिंग को प्रिवेंट करते हैं। स्प्रोटिंग मतलब क्या होता है, पोटैटो के अंदर स्प्रॉट फॉर्मेशन, कोम फूटने बोलते हैं उसको मराठी में, या जैसे हम मटकी होती है पानी में डालने के बाद स्प्रोट फॉर्मेशन होता है ना वो। उसके बाद और फर्दर फंक्शन देखे तो ये देख रहे हैं इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलॉन्गेशन, स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसवर्स ग्रोथ, ये ट्रांसवर्स ग्रोथ करेगा, गर्थ ऑफ प्लांट बढ़ाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने में हेल्प करता है। फ्रूट राइपनिंग, ये तो इसका मेन इफेक्ट है क्योंकि ये राइपनिंग करते हैं बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलता है, और ये सब राइपनिंग दिख रहा है। उसके बाद अपोजियोट्रोपिज्म रूट के अंदर, और सीडलिंग डेवलप होगी, इपीकॉटिल हुक, ये सब अपोजियोट्रोपिज्म, अपो फॉल्स, जियो अर्थ, ट्रोपो ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, ट्रॉफिक मतलब फूड। देन सीनेसेंट बोले सेल एजिंग, इंक्रीज द सीनेसेंट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, ऑक्सीजन, जिनका काम हो गया उनको निकाल दो, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि जो प्लांट के पार्ट रहेंगे और प्लांट को न्यूट्रिशन कम मिल रहा है तो वो यहाँ पर ऑक्सीजन लेयर तैयार करता है सो दैट न्यूट्रिएंट ना मिले उस पार्ट को, वो पार्ट निकल जाए। देन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी स्टोरेज ऑर्गन, इनिशिएट जर्मिनेशन इन द पीनट सीड्स, बोल चुका हूं पहले भी फंक्शन। रूट इनिशिएशन, तो कम कॉन्सेंट्रेशन में इथिलीन को लिया जाए तो रूटिंग होता है, रूट फॉर्मेशन, कौन से, लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स कहाँ पे देख रहे हैं, जब रूट हेयर्स देखते हैं तो जो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं वाटर का अब्सॉर्प्शन करते हैं तो वो ग्रोथ होना, तो उसके लिए। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए सिंक्रोनाइजिंग फूड सेट इन पाइनएप्पल, दिखाया था हमने इमेज में। सेक्स एक्सप्रेशन, तो ऑक्सीजन के जैसे इसके भी क्या है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट है, फीमेल फ्लावरिंग करेगा। और यानी कि जो जेनेटिकली मेल है उसके ऊपर भी फीमेल प्रोड्यूस करना। कैनाबिनस, मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस मतलब समझ में आता है कि मोनो मीन्स सिंगल, ईसियस मतलब हाउस, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों रहना, उसको कहा जाता है मोनोसियस। और डायोसियस मतलब मेल और फीमेल अलग, डाई मीन्स टू, ईसियस मीन्स हाउस, एक मेल एक फीमेल, तो वो यूनिसेक्सुअल है। देन नेक्स्ट इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलॉन्गेशन, ये सब बोल चुके हैं। फ्रूट राइपनिंग, ये बोला मैंने कहाँ कहाँ पे राइपनिंग हो रही है, किस किस फ्रूट में, एग्जाम्पल दे चुके हैं। और फ्रूट पिक्ड अप बिफोर द राइपनिंग, सबसिक्वेंट राइपनिंग कैन बी रेगुलेटेड विथ ethylene when it is needed. Then ripening accompanied, ये बोल चुका, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, हो चुका है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। एथिलीन प्रोडक्शन बाय ऑटो कैटालाइटिक, ऑटो मींस सेल्फ, कैटालाइटिक एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं, पता है। कैटालाइटिक मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इथिलीन विल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन इन अ लार्ज अमाउंट, थोड़ा सा भी रात वापस ये ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब खुद को खुद ही रेगुलेट करके अमाउंट बढ़ा रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा ऑटो कैटालाइटिक। Then few ripe fruits initiate the ripening nearby fruits. Therefore, common practice keeps a few banana unripened to hasten the ripening. समझ में आ जाता है इसे। तो ये ओवरऑल था अबाउट इथिलीन हार्मोन। जो मैंने बोले वाला यहाँ पर सब कुछ वो सुनिए, पॉज करके माइंड में रिकॉल कीजिए, ऑटोमेटिकली सब लर्न हो जाएगा। बार बार देखना है तो पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और नोट्स दिए वाले तो स्क्रीनशॉट निकाल सकता है। थैंक यू।